Okay, so you know that this Helmholtz equation is del is equal to and it means uh, you can say, or this is actually second order partial differential equation. Okay, and the Cartesian components like x, y, z. So this was the Helmholtz equation. ठीक है, और k जो एक constant है, basically it's not constant here. It can represent the wave numbers that the propagation of the waves. ये जो Helmholtz equation है, that is basically used uh, the propagation of the wave to study the propagation. ठीक है, और ये simulation जब simulate करते हैं हम, then this equation is very much helpful कि किसी wave को हम simulate कर सकें. ठीक है, so it's basically it shows the propagation. After that, and one more thing, this del square is also called Laplace operator. ठीक है, and that is simply the rate of change with respect to position. ठीक है, rate of change with respect to position. ये x, y, z, these are all positions. ठीक है, so Laplace operator, and with the help of this operator, we basically find out the rate of change of with respect to space, with respect to position, not time actually. ठीक है, and if excuse me, if let me go to the second slide here. Okay, if the change in one dimension, let's suppose z-axis, okay, we can write like ठीक है, I'm only considering here the if E electric field is only a function of space, that is Z. Okay, so change in one dimension along Z-axis, and electric field, we are assuming that electric field is only a function of space, that is Z. ठीक है, now
After that, E we can write like the coordinate forms. Okay, ijk unit vectors. So if we write the E in the coordinate form, and basically Z here, this Z actually, it shows the propagation direction. Okay. It's a wave propagation direction. And assume, or if we will take only one component of E, ठीक है, कोई एक component हम E का ले लें, or if we assume that to have one component of E, and that could be along x-axis, ठीक है. So this one. So in this case, जो आपकी ऊपर वाली ये इक्वेशन जो है, उसको हम इस तरह लिख सकते हैं. Okay. So Z basically propagation direction, and X is the coordinates, ठीक है, x-axis, and so that the whole equation will be like ठीक है. And this is, now we don't need to go further. I mean, like partial differential, we need simple derivative. And this equation is also called the characteristics equation. It's very helpful to find out some solutions. So if this one is characteristic equation, okay, and we can say that we can say like m square k square is equal to 0, or m is equal to plus minus ik. ठीक है. So इसका solution जो होगा इस equation का, characteristics, जो characteristics आपकी जो characteristic equation है, that would be like ठीक है, ये इसका solution है. जनरल solution जो होता है, ठीक है. और you already know that कि इसमें ये जो equations है और ये जो part है इसका, that is for the incident wave, and that is for the reflected wave. And if the system, जो आप system है आपका, if the system is isolated, ठीक है, अगर सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है, तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड टर्म है, जो रिफ्लेक्टेड वेव टर्म है, दैट कैन बी इग्नोर्ड. ठीक है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो रही. वी अस्यूम दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन. सो उस सूरत में यू कैन राइट लाइक, एंड दिस वन obviously is amplitude.
ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव प्रोपगेटिंग अलोंग z एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपगेट कर रहा है अलोंग z एक्सिस। ठीक है, a इसमें एम्पलीट्यूड है। ठीक है, एंड नाउ इफ यू मूव फर्दर, so we may also write in the form like, because it's x component of the electric field, x coordinate of the electric field here, and we can also write like this. ठीक है, E naught is basically showing the uh, also showing the amplitude of the electric field at the initial stage. ठीक है, and this equation is only z dependent. ठीक है, सिर्फ z dependent है जिस तरफ आपकी propagation हो रही है। Similarly, uh, we can also write like, if this equation is only z dependent, and there can be x dependent, and there can be a y dependent equation. ठीक है, and in this case we can write like, ठीक है, ये x dependent हो गई। ठीक है, if you write in y form, that would be uh, E naught and y I k y. ठीक है, now if we consider the time dependency, okay, so if we consider the time dependency, if we also considering the time dependency, here we are only considering the position and space. So what will be the situation in case of electric field, I'm saying? So the equation will be like, ठीक है, E naught x I k x and minus iota omega t। अगर टाइम डिपेंडेंट भी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं कि टाइम की, जो कि वेव इक्वेशन में आती है। ठीक है, सो इफ वी सिंप्लीफाई दिस वन, दैट वुड बी लाइक माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपकी वेल नोन इक्वेशन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, टाइम डिपेंडेंट एंड स्पेस एज वेल। ठीक है, सो दैट वन ऑफ द इक्वेशन एक्चुअली। ठीक है, सो बेसिकली this equation which we obtain now is basically the solution of the wave equation or the Helmholtz equation। ठीक है, ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो है या वेव इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, सो दैट बेसिकली
और you can say is Helmholtz, क्योंकि Helmholtz equation भी तो wave equation है ना. Okay, so one thing we concluded that this electric field, and it shows that this is a solution of the wave equation or Helmholtz equation. Now, if you move further, now we consider the Maxwell's equation, uh, which was actually Faraday's equation, and we already know this equation, and we consider ठीक है. अब which we already know to, and we have done this kind of simplification before as well. If we take curl on both sides, so what will be the situation here? Okay, applying some vector calculus formulas, ठीक है, तो इसको जो है आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Okay, so इस फॉर्म में curly over curly t, and what exactly del cross e. तो del cross e जो है, that is we know already, that is equal to curly b over curly t. ठीक है, और इस इक्वेशन में ये जो है आपका 0 है, and we have here is like, so curly square over curly t square and b. ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई. And why this one is 0? Because we already know that del b is equal to 0. ठीक है, और one thing which is supposed to be mentioned here, which I didn't put the sign here, it has to be negative. Okay, because we know that delta cross E is equal to minus B over T. ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई, that is B minus curly square B over curly T square. ठीक है, तो नेगेटिव साइन, that is obviously cancelling out, and we are getting like this form. ठीक है, and the solution of this equation can be like, okay, this is for the magnetic field,
And if we have similar kind of equation for the electric field, then the solution will be like okay. So basically we use the Maxwell equations and the modify a bit. Modify a bit and make some changes, and we get some wave equation when then the solution of this wave equation is mentioned like this. Okay, this is the solution of the equation. Now we move further. We leave it here for a while, leave this equation here for a while, and let me try to uh, explain a bit about the wave number or propagation vector, which is k. Okay, so basically जो k आपके पास है, that is wave number. जो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में हम k यूज कर रहे हैं, या यहाँ पे जो k आ रहा है, that is what is that k actually? Wave number, okay, and is also a propagation vector, and the direction of this k is always the side of propagation of the wave. ठीक है, जिस तरफ propagate कर रही होती है wave, इसकी डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है k की. ठीक है. In case of free space, and we already know this thing, check previous lectures, that k is equal to omega over c. Okay, that is for free space. ठीक है, and k is equal to omega over v. That is for any medium. Okay, and if you remember the previous lectures, we know that C is equal to permeability and permittivity. ठीक है, and that is because it's epsilon naught nu naught, so that is why it's for the free space. ठीक है, उसके बाद if there is a medium, then we write like this. So k is a wave number or the propagation vector, and it shows the propagation of the waves is always on the direction where the wave is propagating. ठीक है, और k जो है ओमेगा ओवर c. ठीक है, or omega over c is a case for the free space and omega over v is a case for the medium. ठीक है, फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट है और मीडियम में कोई वेलोसिटी है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट के सी जो है दैट इज 1 ओवर अंडर रूट द परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी. ठीक है, ऑफ सर्टेन मीडियम्स फ्री स्पेस के लिए, और इफ वी कंसीडर द मीडियम देन ये जो है आपकी परमेबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन विद और नॉट. ठीक है, and after that some more terms, maybe these terms you already know, but I need to use here. एक होती है relative permeability. ठीक है, so
relative permeability। ठीक है, relative permeability को हम लिखेंगे ठीक है R। फिर होती है relative permittivity। इसको हम लिखेंगे like this। ठीक है, R is basically showing the relative values। So if we have these terms, then how we can write these equations? So we know K is equal to omega over C, and we know that K is equal to omega over V. And we know that C is equal to epsilon naught and V is equal to, ठीक है? And from the previous slide, we also know that and now if we add these, we know this equation, okay? So if we add these terms or we substitute this permeability and permittivity with these equations, so what we get now, ठीक है? So it means it will be equal to, we can write like rearrangement, ठीक है? So we can rearrange like this। अगर हम इसको rearrange कर देते हैं and we already know that this thing that this thing is equal to this one is equal to this one, then we can write V is equal to C, ठीक है? And over relative terms, ठीक है? Now further uh, we can write like V over C, C को अगर हम उधर ले जाएं, ठीक है? So that would be like, ठीक है? And now if we want to write like C over V, so it will be like, ठीक है? So ये क्या बेसिकली एक रेशो सी है जिसमें एक स्पीड ऑफ लाइट है और स्पीड ऑफ वेव or anything in the medium, ठीक है, is equal to the under root relative terms of permeability and uh, permittivity, ठीक है? After this, we already know कि ये जो टर्म होती है ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करती है, ठीक है? तो if it shows that is refractive index
So it means आपकी जो इक्वेशन है that would be like, ठीक है. So this is the form of the equation. Now if you know already, maybe you have studied this kind of things or not. Refractive index actually uh, can be a complex quantity. ठीक है. But for simplicity, we always take like this simple and the real part of the refractive index, simply n. ठीक है. लेकिन actually ये complex quantity होती है जब when we study the non-linear stuff, then we have to add some terms. But लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उसका real part को use कर रहे हैं. ठीक है. So this is one of the equation. ठीक है. Now we can convert these equation in different forms. Okay. And which we may need later on uh, when we are solving something or driving something or something like this. Okay, so here, if this is the situation, and we know that A is equal to omega over V, ठीक है. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है. एंड जो आपका 1 ओवर V है, बेसिकली जो आपका V है, बेसिकली नॉट 1 ओवर V जो है that it shows 1 over here, this one over under root permeability and permittivity. ठीक है. So what we can do here, that we can substitute this value, this 1 over V. और अगर 1 over V को आप substitute करेंगे, what will you get? इसको if you write like 1 over V, ठीक है. तो ये 1 over V जो है that would be like this. ठीक है. एंड इसको अगर हम substitute यहाँ पे कर दें, so that would be like ठीक है. And after this, in the next step, we can also write like K is equal to ओमेगा, और जो आपका V है वो किसके बराबर है यहाँ पे, दैट इज V इज इक्वल टू, अगर आपका V है, V इज इक्वल टू C ओवर N. ठीक है. सो C ओवर N. ठीक है. तो अगर C ओवर N है तो वी कैन से लाइक ये N ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ गया. ठीक है. तो इस सूरत में वी हैव K इज इक्वल टू ओमेगा N ओवर C. ठीक है. सो प्रोपगेशन वेक्टर जो है इट्स इक्वल टू ओमेगा N ओवर C. ठीक है. और N जो है we already know is equal to this one, so is equal to omega R epsilon R. ठीक है.
So there are two possibilities which I have written here कि एक तो आपकी ये वाली है और ये आपकी ये वाली है, ठीक है, propagation vector in both the cases. Now we can say that k is a simple, I mean, propagation vector. Then we can say that the k naught c, that is basically uh, wave number or propagation vector in free space. ठीक है, नॉट हमने साथ लगा लिया, इट मींस इन द फ्री स्पेस. And what things we know already that k जो है यहाँ पे हमारे पास था ओमेगा ओवर सी. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि this wave number in a free space is equal to this one. ठीक है, तो जो आपकी इक्वेशन बन रही है that would be like k is equal to k naught and relative permittivities. ठीक है, and this is basically important thing. ठीक है, this is one of the relation which is we may need often. There are two kind of materials, not two kind of, there are several kind of materials. If we say about the permeability on the magnetic side, so some are magnetic materials, some are non-magnetic materials. ठीक है, and I'm not going to paramagnetic and etc. Just simple way. So some of magnetic materials and some are non-magnetic materials. ठीक है, non-magnetic materials are pure dielectric kind of. ठीक है, in general we say like this. So if we have for non-magnetic material, that would be is equal to 1. ठीक है, if this one is equal to 1 and so it means पहली बात तो ये कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं दैट इज डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, इफ दिस इज अ सिचुएशन देन व्हाट वी कैन से कि n जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट r. ठीक है, अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैग्नेटिक है देन वी हैव टू कंसीडर द अदर वन एज वेल, permeability. So after that we can write n square is equal to this one. ठीक है, similarly uh, we can also modify this equation if non-magnetic material is like this.
And if the situation is different, if situation is different, like if there is a magnetic material, pure magnetic material, ठीक है? So pure magnetic material. So in this case, this epsilon will be equal to 1. So if this one equal to 1, तो ये जो situation है above equations, उसमें आपका refractive index is only depending upon the permeability R. And this equation will also be like R. ठीक है? तो what we did here, we played around the propagation vector or the wave number and refractive index and these kind of things. So whenever wave is propagating, तो जो आपका material है, that is maybe it's a waveguide or whatever it is, उसका refractive index matters a lot, ठीक है? और वो refractive index की बेस पे ही मटेरियल यूज किया जाता है बेसिकली, जो आपका जब वेव गाइड में जो है वेव आपकी ट्रेवल करती है. एंड द सेम थिंग फॉर द फाइबर ऑप्टिक्स एज वेल. और व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग, वेव किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? सो वेव कैन बी इन अ फ्री स्पेस. वेव किसी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है, ठीक है? और विदाउट एनी मीडियम भी कर सकती है, ठीक है? वेव कॉपर वायर में भी ट्रेवल कर सकती है, एल्यूमिनियम वायर में भी कर सकती है, ठीक है? और दूसरे मटेरियल होते हैं. एंड वेव कैन आल्सो propagate in case of if you have just air or free space, ठीक है? और दैट इज वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट. अगर मीडियम में है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अगर कोई फ्री स्पेस में मूव कर रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ऑल दीज थिंग्स मैटर्स. और प्रोपगेशन वेक्टर जैसे कि मैंने बताया, इट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव इज प्रोपगेटिंग, ठीक है? इसकी प्रोपगेशन बेसिकली शो करता है कि किस तरह वेव जो है वो प्रोपगेट कर रही है. एंड sometime we may need to use a magnetic material, sometime we may need to use a non-magnetic, ठीक है? तो उसके मुताबिक uh, we have to see the equations and adjust the values, different values. So after this thing, uh, ये ये wave vector से related जो stuff है, we'll go back to the uh, Maxwell equations, ठीक है? Okay, so recalling the Maxwell equations, ठीक है? तो when I recall it, it means I have to write it again. That E की जगह पे मैंने E यूज किया है, ठीक है? And we know that it's volume charge density. And I'm only taking the x component of this one, ठीक है? Electric field का भी मैं x ही consider कर रहा हूँ. And we know that is equal to 0. And
this curl of E here, that is this one, and we have here curl of H, and that would be like J, X, and T. Okay, so okay, so these are set of equation, and I call it A. Okay, set of A, set A. Now, if we separate the time part, okay, it has both position and time. So if I separate the time part here, we already know one thing, कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है is equal to this one. ठीक है, you already know. इसमें टाइम पार्ट है जो, और जो उसका स्पेशल पार्ट है, जो उसका पोजीशन है, and we can, if we like differentiate it with time, okay, so what you get minus omega E omega t. ठीक है, इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, that would also be, इसका टाइम पार्ट अलग किया है, ठीक है, और इसके बाद इसका डिफरेंशियल अगर हम लेते हैं, like this, ठीक है. Okay, so now we have this electric field and its partial differentiation with respect to time, and for both electric and magnetic field, ठीक है. Now if we try to put these in the set A, all these equations, okay, then what will be the uh, situation, or what will be the shape of these equations, ठीक है. So if we do it, we can do like here. Basically यहाँ पे हमने differential इसलिए लिया है क्योंकि we need to substitute these values here, so that is why. यहाँ पे E की जगह पे इसके मैंने जो सेपरेट किए हैं द टाइम कंपोनेंट्स और दूसरे
राइट लाइक दिस, ठीक है, और इधर भी ठीक है, टाइम पार्ट separate. So in this case, which is obvious, this one and this one will go away, and you have equation here like okay. So you have uh, position dependent stuff here. The position dependent. This equation will be a position dependent, the time independent now. ठीक है, इसी तरह the equation we did with this one, और इसी तरह अगर इसमें हम रखें तो uh, that would be like is equal to 0. ठीक है, this one, okay, this one, and now if we use this equation and substitute the values here, then let's see what will be the situation here. Is equal to plus the omega, this differential form, okay, and omega t. ठीक होगी बात. So here also these things will go away, and your equation will be like this one. ठीक है. So there is also no time components here. ठीक है, at the moment. Now we move to the fourth equation. तो जो उसकी चौथी equation है, that would be like h के भी उसे split किया हमने component को, ठीक है, x exponential omega t is equal to j, and j में भी हमने split किया है, ठीक है, and then we have other part which is ex and exponential omega t. ठीक है, so it's obvious now, this one, this one, this one, this one will go away, and what you have here, it has to be minus, okay. So this is the fourth one, ठीक है, and here also it's basically it's position dependent, ठीक है. So we have these uh, four equations now, जो कि जब हमने स्प्लिट कर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों
position और उसके time. So then we get this form of the equation. ठीक है. And if I write these one separately, all these equations, that would be much better. So what we have basically, what we have done actually, उसमें हमने जो पहली इक्वेशन थी, this equation will be of इस फॉर्म में आ गई. ठीक है. जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0, और ये जो है ये आपके पास इस फॉर्म में आ गई. एंड आफ्टर दैट जो आपके पास तीसरी इक्वेशन थी, तो this you have in this form. Okay. And the fourth one, which was like so that would be like is equal to ठीक है. So we have these two set of equations. ठीक है. These two sets of equation, but we'll see how we'll use these things. So that is enough for today's lecture. और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी जो you can say it's like time harmonics, or you can say it's the Fourier transformed form of the Maxwell equation or something like this. ठीक है. And if you have any question now from today's lecture, you can ask, and meanwhile I will check the attendance. ठीक है. Okay, so let me see who is there now. So you can also see actually the students here in this class. Amber Riaz present or not? Amber Riaz हैं? Yes sir, present. तो इतनी देर में आपने क्यों रिप्लाई किया? सर वो मैं माइक ऑन कर रही थी तो. लेक्चर ही सुन रही थी, कुछ और कर रही थी आप? नो सर, लेक्चर सुन रही हूँ लेकिन वो माइक नहीं ऑन था मेरा.
अच्छा, आतिफ अली, हैदर सर। ओके, गोहर राइस हैदर, गोहर राइस हैदर, मोहम्मद यासीन, ये मोहम्मद यासीन मैंने आप लोगों से कहा था कि आप अपनी डीपी लगा छोड़ें, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, ताकि मुझे पता चले, शक्लों का ही पता चल जाए, लेकिन आपने अपनी डीपी नहीं लगाई। ये आसिफ रजा खान साहब, आप कह रहे थे कि ये जो यासीन है, इज थिंकिंग टू फ्रीज और समथिंग लाइक दिस। जो नंबर था ना, फिर मैंने ना पता किया था, इनके जो बैच पहले थे वो कह रहे थे कि इसका जो नंबर दिया हुआ है वो बन जा रहा है। अच्छा अच्छा, यानी उसका कोई पता आज नहीं मैं है। मजीद आशीष साहब से आज मजीद पता करता हूँ कि इसका क्या किया है। ठीक है ठीक है, ओके। सो काजी माज उस इस्लाम, आई थिंक ही इज प्रेजेंट। यस सर। हाँ जी। ये पूरा नाम आपका क्या है? काजी माज उस सलाम। यस सर, काजी माजुस सलाम। तो आप काजी हैं कहीं? जी काजी मतलब आपके नाम के साथ है? सो ये सर एक कास्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अक्सा रहमान, जी सर। ओके गुड। दानियाल इमाम, जी सर। आप लेट आए क्लास में? सॉरी सर। लेट हैं क्लास में आप? सर मुझे आज 5 मिनट देर से ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, वैसे रेगुलर हैं आप? जी सर, हर क्लास अटेंड की है। ओके। इबादुर रहमान, इबादुर रहमान, माज ये आपका है ना? ये काजी माज ये आपका फेलो है ना, इबादुर रहमान? यस सर। ये आता क्यों नहीं है? ये पिछले में भी नहीं था गालबन ये, और आज भी नहीं है, उससे पहले भी ये इतना है। सर वो बोल रहे हैं सॉरी, सर असल हाँ जी बताएं। माज का सर वो असल में ये घर गए हुए उधर कराची, शायद उधर का सिग्नल का थोड़ा सा इशू है तो। यार, ऑनलाइन ऑनलाइन का कुछ तो एडवांटेज लेना चाहिए आप लोगों को ना, जहां भी हो ले सकते हैं आप क्लास। अ, अ, पता नहीं सर, शायद वो बता रहे कि माइक्रोफोन का इशू है, टेक्स्ट किया होगी। बहाने बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। एनीवे, मोहम्मद इबादुर रहमान, मोहम्मद इबादुर रहमान, मोहम्मद इबादुर रहमान एब्सेंट है। ओके, ताहिर सज्जाद भट्ट, प्रेजेंट सर। ओके। लेक्चर ही सुन रहे थे, कुछ और कर रहे थे? सर लेक्चर सुन रहा था तो उसी टाइम जवाब दिया ना। ठीक ठीक। आसिफ रजा खान, आसिफ रजा खान, आसिफ रजा खान, ये किसका माइक ऑन हुआ है? इतना शोर है पीछे। सर उन्हीं का ही माइक ऑन हुआ है। अच्छा, तो जवाब नहीं दिया आसिफ रजा खान। फातिमा इखलाक, यस सर। ओके। मुदस्सर नईम, ओ सॉरी, मुदस्सर नईम तो वो है। नजीबुल्लाह, यस सर। ओके।
अच्छा, आप लोगों को जो असाइनमेंट थी उसमें आपने सबमिट तो करा दी, अ, उसमें आपको कोई इशू या कोई ऐसा जो आपको समझ ना आया हो, अ, कोई है उसमें आपको प्रॉब्लम ऐसी? Because that will definitely help you to prepare the midterm exams as well. Okay, so सर मिड होने कब है? मिड होना कब है? मैंने शुरू में बता दिया, अभी मैं डेट नहीं दे सकता, मैं वहां पे आके लूंगा, ठीक है? लेकिन जी ठीक है, वेरी शुक्रिया सर। आपको टाइम मिल जाएगा उसका, लेकिन इसी महीने में लूंगा मैं, ठीक है सर। ठीक है? Okay, so if you don't have any question other than to ask the midterms or something like this, then I will sign off. अगर आपको कोई वो असाइनमेंट में कोई चीज़ समझ नहीं आई, या आप समझते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यू कैन, यस। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है काफी दूर से। कहें। सर आपने सबके नेम कॉल किए हैं? हाँ जी, सबके किए हैं। आपका क्या नाम है? उबैदुर रहमान, तो मेरा आप, नेम आपने कॉल। नहीं, मैंने 50 दफा आपका नाम लिया, आप गायब होते हैं गालबन, आप ऑनलाइन होके ना इधर उधर चले जाते हैं। ये मैं पहले इधर भी, ही था, मैं इधर यू ही कैन था, आस्क। लेक्चर ही सुन रहा था। आप इबादुर रहमान और उबैदुर रहमान में मैं कंफ्यूज हो रहा था। नहीं, उबैदुर रहमान और मोहम्मद उबैदुर रहमान मैंने कहा था। बेशक आप पूछ लें बाकी क्लास फेलो से। एनीवे, सो आई विल बी साइनिंग ऑफ। मेरा कह रहा था कि अगर आपको कोई असाइनमेंट में मसला है या कोई क्वेश्चन आपने समझना है, तो यू कैन मीट टू मुदस्सर, ठीक है? उससे टाइम ले लें। इफ एवरीथिंग इज ओके देन इट्स ओके, बट अगर आपको कोई है कंफ्यूजन, तो यू कैन गो टू द टीए, ठीक है? ओके, सो आई विल बी साइनिंग ऑफ, ठीक है? एंड विल सी in the next lecture, and how it will be I will definitely email you, ठीक है? ओके जी, बहुत शुक्रिया क्लास लेने का और सुनने का, ठीक है? अल्लाह हाफिज।